Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So today's topic is about artificial intelligence. Artificial intelligence दुनिया में वो चीज़ है जो कि it is a tool. It's a tool that is being used. It's a tool that is complementing the business. It is a tool that is supplementing the business. और business का क्या काम है? Business का काम ये है कि आपकी जो decision making है उसको accelerate कर रहा है, right? तो वन ऑफ द थिंग्स जो आपको सोचनी है, आप दुनिया के किसी भी डिसिप्लिन में हो, दुनिया का कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जहाँ पर डेटा नहीं है, और जहाँ डेटा है वहाँ बिग डेटा आएगा, और जहाँ बिग डेटा आएगा वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मिलेगी। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस को एजिलिटी चाहिए, यानी कि फास्ट डिसीजन मेकिंग करना, राइट? सो फॉर एग्जांपल, आप जो है अकाउंटेंसी में है, फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है, ठीक है, आप स्केडा की इंडस्ट्री में है, आप साइबर सिक्योरिटी में है, नो मैटर वेयर यू आर, ठीक है, नो मैटर व्हाट यू डू, आप इवन के आप जो है अप्लाइड साइंसेस में है, वेदर साइंसेस हैं, यू कैन से जियोलॉजिकल साइंसेस हैं, यू कैन से कि आपकी जो क्लिनिकल साइंसेस हैं जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और ये सब चीज़ों पे काम होता है, ठीक है, वेयर एवर देयर इज डेटा, एंड डेटा इज एवरीवेयर. So wherever there is data, this is one of the tools that is utilized in, you can say कि expedite करना, fast करना decision making process को, ठीक है, understand करना कि हम और किस तरीके से क्या decision making कर सकते हैं, understand करना कि ये जो इतना सारा ocean of data है इसको sniff off करके how can we figure out what are the best decisions. and दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशन से यूज कर रही हैं इसको, वो एक पर्सपेक्टिव है, वो है बेसिकली अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना, वट एवर सर्विसेज दे आर, टेलको सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, यू नो, कंज्यूमर सर्विसेज हैं, वट एवर दे आर. रिसर्च है, रिसर्च के अंदर आपको अगर मजीद जाना है, यू नो, यू कैन यूज इट इज बीइंग यूज्ड. फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसे फाइनेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट, BFSI, यहाँ आपको मिलेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप दुनिया में किसी भी सेक्टर में चले, इवन एंटरटेनमेंट, मीडिया, यू विल फाइंड इट, राइट? दुनिया का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर AI पेनिट्रेट नहीं कर रही. लेकिन पेनिट्रेट जो मूवीज में दिखाते हैं, दैट्स नॉट द केस. जो आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, that is not the case. I'm going to show you exactly where AI is really being used, and it is essentially being used to govern the companies, to minimize the risk posture of the companies, and to make decisions, compliant decisions, right? So ये आपको deep insights जो हैं वो यहाँ पर ये चीज देती है. Now let's look into all the global providers, ठीक है ना, कि businesses किस कॉन्टेक्स्ट में AI को यूज करना है. You need to understand कि भाई businesses कर क्या रहे हैं, and what exactly the businesses are really doing, right? ठीक है, so that will give you some idea, some perspective के exactly what is happening, you know, what are organizations really doing, right? So globally you will find many big providers, right? आपको बहुत सारे बड़े providers मिलेंगे जो किस पे काम कर रहे हैं. So if I type in AI service providers, ठीक है ना, globally, so you'll find couple of names, right? And I'm going to show you those names as well. Just give me 1 minute. These names are pretty big names. They are doing many things within the industry, and this is where you have to really understand कि दुनिया में हो क्या रहा है. So दुनिया में इस वक्त 5 बड़े क्लाउड AI के अंदर आपको 5 बड़े प्लेयर्स मिलेंगे. 4 जो है वो नॉर्थ अमेरिका में से हैं, Amazon, AWS, Azure and GCP, and the 5th one is basically Alibaba, which is based in you can say in China, right? So these are 4 big cloud providers. Now these cloud providers, what are they doing? You know, let's look into all of those things. If I look into IBM की एक पूरी लाइन है which is known as IBM Watson, right? IBM Watson क्या कर रहा है? This is their AI platform जिसके अंदर वो सारी services provide करते हैं, सब कुछ देते हैं, right? There's a lot of things going on within this sector.
इसमें बहुत सारा काम हो रहा है दुनिया में। IBM के जो सॉल्यूशंस हैं वो सारी की सारी जो हैं वो ट्रस्ट, लैंग्वेज, ऑटोमेशन, इन तमाम चीज़ों के ऊपर है। देयर आर मोर देन 100 मिलियन यूजर्स राइट नाउ जो इसकी कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज ह्यूज। इसको रिस्क में यूज किया जा रहा है, इसको रिटर्न टू वर्क प्लेस में यूज किया जा रहा है, फाइनेंशियल ऑपरेशंस में यूज किया जा रहा है, एडवर्टाइजिंग, बिजनेस ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, कस्टमर सर्विस, IT ऑपरेशंस, यू नेम इट, राइट। दुनिया का कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, फाइनेंशियल, ट्रैवल, हेल्थ केयर, रिटेल, सर्विसेज, सिक्योरिटी, ईच एंड एवरी सेक्टर इज देयर। सो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सप्लाई चेन है, ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द की सर्विसेज, राइट, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। नाउ AI is used in basically, as I said, making decisions. Similarly, आपको AWS मिलेगा, AWS की आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी जिसमें एडवांस टेक्स्ट एनालिटिक्स है, ऑटोमेटेड कोड रिव्यूज हैं, अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द डेवऑप्स, चैटबॉट्स हैं, कंज्यूमर, यू नो, कंज्यूमर्स के पास जाना, करीब रहना कस्टमर्स के पास, डिमांड फोरकास्टिंग, आपको डिमांड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, आपके अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको एनालाइज करके विद इन आवर्स आप उसको ना पूरा एनालाइज करके एक पूरा डेटा निकाल सकते हैं। एंटरप्राइज रिसर्च, फ्रॉड प्रिवेंशन, इमेज एंड वीडियो एनालिसिस, अगर आप इफ यू हैव टू हंट फॉर समवन, अगर आपने किसी को ढूंढना है, ठीक है, तो अगर आप उसको तस्वीर है अगर आपके पास, यू कैन क्रिएट अ बायोमेट्रिक, यू नो, key print of that of a good picture, and then you can hunt for that person through, you know, hours and hours and hours of videos. वो जितने भी घंटों की वीडियो है इसके अंदर उसकी पिक्चर निकाल के दिखा देगा आपको कि what who is that person. रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए है, टेक्स्ट टू स्पीच या ट्रांसक्रिप्शन के लिए। You see, AWS is one of the biggest cloud providers. फिर आपको मिलेगा जो ना ग्लोबल AI सर्विस प्रोवाइडर्स, मैजिक लीडर्स, राइट। और अगर आप लिखें गार्टनर मैजिक quadrant, right, you will find some good names and I'm going to show you all of those. Then you have Azure again एक बड़ा काम कर रहा है इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर, और इसका जो सारा काम है वो कस्टमर सक्सेस स्टोरीज के ऊपर है, मतलब कि there's a lot of things that it is doing right now, ठीक है, there's a lot of things that just give me 1 minute. So one of the key things you have to understand is Azure की applied AI services हैं, Azure की cognitive services हैं, Azure की machine learning है, AI का infrastructure है। Azure की services इतनी extensive नहीं है जितनी आपको दूसरों की मिलेंगी, right? फिर आपको मिलेगा GCP की AI services. GCP ने again अपनी services दी हुई हैं, and you can see everyone is talking about responsible AI. This is a different topic to discuss about how can we have responsible AI when there's a lot of biasness within the data, when there is a lot of biasness within the algorithms, when there's a lot of biasness in many other aspects, because AI you are feeding in the information and the perspectives, which is essentially from the Western society, right? It doesn't understand the context or the pretext of different religions and all of those things. This is a huge debate, right? AI for data scientists, AI for developers, automate, auto ML, cloud interface. There's so many things जो उसके ऊपर काम हो रहा है. And then you have Alibaba. Alibaba भी जो है अपनी services provide कर रहा है. And you can see all of these cloud providers, they are providing these services like artificial intelligence में इनके पास जो है image search है, machine translation है, machine learning platform है, and intelligent speech interaction है. Now, if you pay attention, if you have been paying attention, IBM का सबसे ज़्यादा strongest suite है इसके अंदर, right? IBM का सबसे ज़्यादा strongest suite है. IBM क्या कर रहा है? What IBM is doing is, it is providing, it is the leader in terms of developing the state-of-the-art, you can say AI platform, Watson, right? और उसका जो सारा काम है दुनिया में वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हो रहा है. How to make it, how to expand the service, how to make
assist the decision making of the customer, so on and so forth, right? So इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए one thing is now clear is AI को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल प्रीडोमिनेंटली डिफेंस सेक्टर अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसका एक बड़ा स्पेसिफिक सेक्टर है, वॉर गेम सिमुलेशंस एंड ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स. हाउएवर at Anafe, we only emphasize on teaching you the job description, right? We are here to teach you the job description. हमारा जो काम है वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाना है, ना कि आपको जॉब मिल जाए. यू आर एबल टू स्टार्ट योर ओन कंपनी, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, you need to know and understand these technologies. कैसे आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, right? So that's one of the things that we are doing, and that is why we are here discussing all of these things. If I show you the magic quadrant in AI services, कि AI के अंदर सबसे आगे कौन है, you will see कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे टॉप में जो लोग आपको मिलेंगे वो IBM मिलेगा. And this is something coming from Gartner Magic Quadrant, right? You can see IBM, Google, Microsoft, Amazon Web Services, they're all holding the leaders, right? IBM is the leader. Google is catching up, but Google has a long way to go still. In the cloud business, Google को अभी भी एक स्टार्टअप कहा जाता है. Microsoft and Amazon की कंप्यूटर दूसरी सर्विसेज ज्यादा हैं, लेकिन IBM AI में सबसे आगे है, ठीक है? और ये एक now let's talk about कि अगर आपने इसमें काम करना है, यानी कि अगर आप अकाउंटिंग में है, फाइनेंस में है, बिजनेस में है, मार्केटिंग में है, आप साइंसेज में, अप्लाइड साइंसेज में काम करते हैं, आप इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, whatever section you are in, दुनिया में कोई भी सेक्टर में आप काम करते हैं, ठीक है? किसी भी सेक्टर में, म्यूजिक, whatever sector, you need to understand AI, because AI, one way or the other, can replace you if you do not learn it. Because if you learn it, you will be able to harness it. तुम उसको चला रहे होगे, you will be able to manage it. लेकिन अगर तुम लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, if you don't update yourself, it will replace you. It will happen in 10 years, in 15 years, maybe 5 years. Who knows? मैं आपको अपना बता देता हूँ कि businesses में जिस तरह से implement किया जा रहा है, as per the World Economic Forum report, around 85 million jobs will go away by the end of this year. That's a tough, but 100 million new jobs will be created. 100 million new jobs will be created, right? And that's a big number. So what you need to do is, what you need to understand is, how can you harness AI? कैसे harness कर सकते हैं? Now, this is where it gets interesting, और मैं इसके ऊपर फिर आपसे बात करूँगा. So if you go to on our website, right, anafe.com, and if you start studying, the career advancement track, this is the track where we are teaching you all the key industries, right? All the key industries को हम आपको teach कर रहे हैं. We're teaching you all the key industries, what you need to do, how you need to do, क्या काम पढ़ना है, क्या करना है. This is exactly where AI is being utilized. That's one of the first thing that you can do. The other thing is, जो हम AI लेकर आ रहे हैं, ठीक है? Because you need to understand the context. AI को अगर खाली AI पढ़ोगे, you won't be able to do anything. But you need to understand the context, because अगर तुम्हें context समझ नहीं आएगा, you won't be able to work with an AI. So AI का हमने एक पूरा advancement track बनाया, which is something that we are about to release, right? हम जिसको जल्दी release करने वाले हैं. In this, the first step is CAT. Once you start doing the CAT, then you learn, all the academic AI. This is all the academic AI: intelligent search agents, AI and adversarial games, supervised learning, neural networks, gradient descent, Bayesian logarithm, all of those Bayesian networks, all of these things, right? हम आपको cover कर रहे हैं. And then we are also covering all the key labs as well, from an academic perspective, because आपको academic understanding चाहिए, मगर इसको पढ़ने से पहले आपको e-math CAT के अंदर करना पड़ेगा, right? You can do these things. It's very easy. It's not that difficult. ठीक है? This is like a bachelor's and a master's level program lumped in with all the key जो information है हमने आपको रख दी. Then you go through certificate in ML, diploma in ML, and optional courses, because ML is part of AI. Machine learning is part of it. This is how AI is continuously अपनी information को expand कर रही है, right? And then you go through GPT-3, IBM Watson, all the key things, all the key solutions, Microsoft Azure की,
and then Amazon Web Services. These are the key services that we are covering right now, right? And this will give you the information you need to look for the jobs, or be ready to work within the industry of the jobs that you're looking for, right? So globally, दुनिया में, no matter where you are, no matter what industry you're working in, अगर आपने इसको सही तरीके से पढ़ा, समझा, and if you have to do all of those things, ये जितना काम करना है, you know, career advancement track contains around 800 to 900 hours. If you take away 400 hours of IELTS, then it leaves 500 core hours, right? 500 to 600 core hours. So almost 1,000 hours, right? 1,000 hours in total. Labs and many things, right? And then the AI itself has around 200 hours. So those 200 hours plus core 500-600 hours, in 800 hours altogether, 700 to 800 hours, आप अपने आप को industry में जाके काम कर सकते हैं. Because studying the career advancement track and studying the AI advancement track enables you, आपको ये enable करेगा to give you all the key information, the hands-on skills, the academic knowledge, the industrial knowledge, how to implement these solutions, how to develop these solutions, and also give you the experience letter, because you will be doing it and आपके CV के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है, that you developed that you worked in a multi-cloud environment, and that you develop all of these key applications, IBM Watson, IBM Conversation Builder, predictive audiences, influential, आपने सब पे काम किया. So you were able to create the applications and develop the applications and manage these applications. And that gives you the edge जो organizations ढूंढ रही हैं, right? So this was a high level talk. If you want to ask questions, अगर आपको सवाल पूछने हैं, because देखें, no matter what degree you do, even if you do your degree from any of the universities in the world, आप कहीं से भी university से आप degree करके आ जाएं, they won't teach you any of the commercial solutions, how to develop solutions, how to utilize these solutions, right? They will keep you within the realm of I would say academia. अब academia ही के उसमें रहोगे, लेकिन अगर आपको उसमें जाना है और आगे मजीद काम करना है, that is the place to go, right? And this is what you need to learn. अगर आपने वो कर लिया, that also opens doors and opportunities for you of heading outside of your own country. I mean, not only it gives you the local mobility कि आप अपने मुल्क में काम कर सकें, बल्कि international mobility if you want to go outside as well. So this presentation was a quick presentation. We just wanted to inform you what needs to be done, how you can do it. If you have any questions, अगर आपको कोई भी सवालात हैं, you can go to stream.anafe.com. You can browse the room, whatever language you speak. If it's going there, you can go there and you can say, and you can ask questions there, and we'll be more than happy to answer them back. So I'm going to pick up questions from here. मैं इसके सवालात pick करना शुरू करता हूँ, ठीक है? So the presentation is now over. Again, if you have any questions, you can always email it to us at support@anafe.org, and we will be more than happy to answer.